moral support and directions in ensuring completion of erection of 33 gates in record period and before the commencement of this year irrigation season. Thank you very much, sir. Welcome to you, sir. I welcome respected Shri C.R. Patil, Honorable Union Minister for Jal Shakti, Government of India, for his esteemed presence. Sir, it's a proud moment for us to have you and have your gracious presence here for this function at the dam site, sir. I heartily welcome you, sir. I welcome respected Shri N. Chandrababu Naidu, Honorable Chief Minister, Government of Andhra Pradesh, for his leadership and gracious presence for today's function. I welcome respected Shri Revanth Reddy, Honorable Chief Minister, Government of Telangana, for his distinguished presence in today's function. I welcome Shri Basuraj Horatri, Honorable Chairperson, Legislative Council, for this function. I welcome Shri Nimala Ramanaidu, Honorable Minister for Water Resources, Government of Andhra Pradesh. I welcome Shri Uttam Kumar Reddy, Honorable Minister for Irrigation, Government of Telangana, for his distinguished presence. I welcome Shri P. Keshavlu, Honorable Minister for Finance, Planning and Commercial Tax, Legislative Affairs, Government of Andhra Pradesh. I welcome Shri Raghavendra Hitnal, Honorable Member of Legislative Assembly, Koppal Constituency. Shri Jopalli Krishna Rao. Shri Shakti Srihari. We welcome Shri V.L. Kantarao, Secretary, Department of Water Resources, Ministry of Jal Shakti, to this event.
We welcome Shri Tukaram, Honorable Member of Parliament, Ballari. We welcome Srimati Prabha Malikarjuna, Member of Parliament. We welcome Shri T.B. Jayachandra, Special Representative, Government of Karnataka. We welcome Shri H.K. Patil, Honorable former Minister. We welcome Shri Salim Ahmed. We welcome Shri Bosraj. We welcome Shri H.M. Revanna, Mr. Gaviyappa, Shri Hampangowda Badarli, Shri Nasir Ahmed, Shri G.S. Patil, Srimati Lata Malikarjuna, Shri Rajshekhar Hitnal, Member of Parliament for Koppal, Shri Basuraj Rai Reddy, former Minister and Senior Leader, Shri Baswangowda Badarli, MLC, we also welcome honorable members of Legislative Assembly from all the states of Andhra Pradesh, state of Telangana, and also the state of Karnataka. We are really privileged to have your presence. Above all, we extend our heartfelt welcome to farmers of Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. This great dam was built for you. You have made great sacrifices by giving up one crop for the replacement of these gates. I also welcome the media persons and all invitees gathered here. Thank you very much, honorable invitees, honorable leaders, and dear friends. Thank you very much. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದಂತಹ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಖುದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತೋರಿಸಿರೋದು ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕರ್ತಾಣದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಎನ್ನುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಇದೀಗ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಏರಾ. ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಮೂರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ನಾಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂರೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರ್ವದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡಲಿ. To begin this momentous occasion, I request Union Minister of Jalashakti, Shri C.R. Patil, ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ
ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ಹಾಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, this landmark project stands as a symbol of strength, resilience and enhanced irrigation infrastructure, serving as a lifeline for not just for our state but also the neighboring states that depend on these vital waters. ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. 33 ಸ್ಪಿಲ್ವೇ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. Well, ladies and gentlemen, this is indeed a very important moment. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ. We thank all the dignitaries for traditionally lighting the lamp and signaling the beginning of a new era. At this juncture, we request the chairman of Tungabhadra board, Mr. S.N. Pandey, for the overview of the gates installation journey. Shri Pandey. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು. Since Shri Gaurav Gupta has already given the overview, we'll have the audio-video display of Tungabhadra Gates for the next 3 minutes. Video, please. In the heart of southern India stands a lifeline that has sustained generations, a vital source of water, irrigating nearly 17.33 lakh acres of agriculture land and supporting industries and communities across Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. This is the Tungabhadra Dam, stretching 1,798 meters across the river. With a 701-meter-long spillway and a storage capacity of 132.471 TMC, the dam has been a symbol of prosperity and development for more than 7 decades. On the night of August 10, 2024, at precisely 10:50 p.m., spillway gate number 19 was washed away. At that moment, the reservoir held 105.306 TMC of water, nearly at full capacity. Floodwaters continued to move through the spillway while engineers faced a critical challenge. During this critical period, public representatives and board members from all partner states visited the dam site. Extending their support and encouragement to the engineers and workforce. Under the guidance of renowned gate expert Shri N. Kanhaiya Naidu, a temporary stop-lock system was designed. In a historic engineering achievement, the stop-lock elements were successfully installed under flowing water conditions, a first in India. The immediate crisis had been overcome. But a larger question remained. Could the remaining gates continue to perform safely? To find the answer, the Tungabhadra board constituted a technical enquiry committee under the chairmanship of Shri A.K. Bajaj. In addition, Shri Anil Jain, chairman of the National Dam Safety Authority NDSA New Delhi, visited the Tungabhadra Dam and submitted his inspection report. Accordingly, a Standing Expert Advisory Committee SEAC was constituted under the chairmanship of Shri S.N. Pandey. Based on the recommendations of the A.K. Bajaj Committee, NDSA and SEAC, the board decided to undertake a comprehensive health assessment of all spillway gates. The findings were alarming. The results revealed extensive corrosion, structural fatigue, material degradation, and weakened load-bearing members caused by decades of exposure and continuous operation. The verdict was clear. Replacement was no longer an option. United by a shared responsibility, the governments of Karnataka,
Andhra Pradesh, Telangana and the Government of India came together to confront an unprecedented challenge. Shri C.R. Patil, Honorable Union Minister of Jal Shakti, Government of India. The Honorable Chief Ministers, Shri Siddaramaiah of Karnataka, Shri N. Chandrababu Naidu of Andhra Pradesh, and Shri A. Revant Reddy of Telangana demonstrated exceptional leadership, placing the safety and welfare of millions during the 223rd Emergency Board meeting held on 3rd June 2025. To ensure public safety, reservoir storage would be restricted to 80 TMC. Across the command area, thousands of farmers sacrificed their rabi crop in service of a greater cause. At the same time, preparations began for one of the largest spillway gate replacement projects ever undertaken on the dam. Tenders for the replacement of all spillway gates were invited and finalized. The new spillway gates took shape at fabrication sites in Hosapete and Gadag. The transformation could begin. Existing gates were carefully dismantled. Old structures that had served the nation for nearly 70 years were gradually replaced with a new generation of spillway gates. On January 12, 2026, the first newly installed gate successfully completed its trial operation. One by one, the remaining gates followed. That was an audio-video display which gave us a bird's eye view. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘಿಸೋಣ. ಬಂಧುಗಳೇ, it is my proud privilege to invite a dynamic leader, a visionary architect of development and a tireless force behind Karnataka's progress, our Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivkumar. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮುಖೇನ. ಬಂಧುಗಳೇ, ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 24/7 ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್. ಜನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾನಾಯಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, Honorable C.R. Patil Saab, Honorable Union Minister for Jal Shakti, Government of India, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಿತ್ರರಾದ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಮಾಲ್ ರಾಮ್ ನಾಯ್ಡುರವರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾವ್ರವರೇ, all the members of the parliament, all the members and the leaders of the three states, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana, all legislators are here. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. All our chairman of the Tungabhadra board, all the members of the committee, all the important office bearers, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೇರತಕ್ಕಂಥ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ರೈತ ಮಿತ್ರಗಳಂತ ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೊಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನಾವು 19ನೇ ಗೇಟ್ ಒಡೆದೋದಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಂಗಡಿಯವರು, ಡ್ಯಾಮ್ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 8:15 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಬಂದು ನಿಂತು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನೀರಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಗೇಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರನ್ನ, ಭತ್ತದ ಕಣಜನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಉಡುಕರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಪವಾಡ, ಹಂಪಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಕೃಪೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಯಕೆ. ಇದರಿಂದ 33 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ 33 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ 3 ರಾಜ್ಯದ ರೈತರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭಗವಂತ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಂದು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅಂದು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ, ನಿಮ್ಮ ರೈತ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮರ್ತವನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಟುಡೇ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ water resources. Today, under the leadership of C.R. Patil ji, 3 chief ministers, one of the senior most leader of this country, Mr. Chandrababu Naidu, is here. He has shown his large heart to prevent all of us. One more, my young friend, Telangana Chief Minister, Mr. Revant Reddy is here. So today, with the 3 chief ministers under your leadership, has created an history. Myself, Chandrababu Naidu and Revant Reddy, we believe in one thing. We don't want to write history. We don't want to read history. We believe in creating history. That is what all the 3 leaders of the South India is. So I am very happy you are a part of this great movement and you have shared us. Ivattu, one more thing I would like to tell you. I always tell one thing. ಜತೆಗೂಡುವುದು ಆರಂಭ, ಜತೆಗೂಡು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರಗತಿ, ಜತೆಗೂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಶಸ್ಸು. That means joining together is the beginning, discussing together is the progress, working together is the success. That is what, under the leadership of Mr. Patil, we have joined, we have discussed, and today a message is going to come to all the farmers of the 3 states that we all are united and we will save the farmers of the state. ಇವತ್ತು ನಾವು 3 ಜನನು ಸೇರಿ
ಐತಿಹಾಸಿಕದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ನೀರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, 33 TMC ನೀರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದವರು, ರೈತರ ವೇದಿಕೆಯವರು ಏನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಈ ರೈತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, our honorable central minister will announce the decision taken with all of us. Today whatever we have decided and discussed for 1 hour, this will go to the history of water resources and in the federal structure of this country to protect the constitution, to protect our rights, to save the farmers. ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ 3 ರಾಜ್ಯದ ರೈತರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ 1860ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು SR ಆರ್ಥರ್ ಪಾಟ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ 1949ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ರಾಯಲಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪೀಠದವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು. ಇವತ್ತು 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನೇಕ ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ಗೋದಾವರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನದಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು, ಈ 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2 ಆಯ್ಕೆ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೋಗೋದು, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ದೇವರು ವರನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಪನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಾಗಲು, ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಂತ ಈ ಹಸಿರ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ, ಈ ರೈತಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೈತಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೈತಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೈತಿಗೆ ಲಂಚ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೈತಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೈತನ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಭತ್ತದ ಕಣಜವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ನಾವೇನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 3 ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 2 ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಸಚಿವರು, 5 ಜನ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಂತಾರಾವ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, our honorable central minister will communicate to all of you. We all are united. We are joined together for the progress of the state, all the 3 states. Ultimately, it is our bound duty to protect all our states, at the same time to protect the country as a nation. So with this, today I would like to thank
the Central Minister once again. Mr. Patil Saab is a great visionary leader, hard-working, is a solution maker, is a solution for everything. So I am very happy, and a forward-looking Chief Minister Chandrababu Naidu and our Revant Reddy both have joined with us to make all of us happy. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ರೈತರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿ, ದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ತೆಲಂಗಾಣ, ದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ Andhra Pradesh and Karnataka, I would like to thank all of them for joining hands together, working together, and see that you protect the interest of this nation and the farmers. Jai Hind, Jai Karnataka, Jai Andhra, Jai Telangana. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೆಕ್ಕಿದ್ದು ಕೊನೆಯದಿರುವವರೆಗೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ, ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಚಪ್ಪಾಳಿ ನಿತ್ತು ವಂದಿಸೋಣ, ಗೌರವಿಸೋಣ. ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಗೌರವ ವಂದನೆ. Thank you, Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivkumar. We now request the Honorable Chief Minister of Government of Telangana, Shri A. Revant Reddy Garu. Put your hands together. Swagatam cheyandi, Shri Revant Reddy Garu. తుంగభద్ర డ్యామ్ గేట్ల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి సభాధ్యక్షత వహించిన మిత్రులు, కర్ణాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు డికే శివకుమార్ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన జలశక్తి మినిస్టర్ సిఆర్ పాటిల్ గారు, అదేవిధంగా మనందరి కష్టాలు, మనందరి సమస్యలు తెలిసిన సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం కలిగిన భారతదేశంలోనే కొద్దిమంది నాయకులలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, నా సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు మిత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, వాకిటి శ్రీహరి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నా ప్రియ మిత్రులు మంత్రివర్యులు పయ్యావుల కేశవ్ గారు, సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రివర్యులు నిమ్మల రామనాయుడు గారు, కర్ణాటక లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్పర్సన్ గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు, లోక్సభ సభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, కేంద్ర జలశక్తి కార్యదర్శి కాంతారావు గారు, ఇతర అధికారులు, ప్రాణ సమానులైన బళ్ళారి ప్రాంత, అనంతపూర్ ప్రాంత రైతులందరికీ హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. మిత్రులారా, ఈ రోజుకున్న ప్రాధాన్యత ఆనాడు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన ముహూర్తం 1950 దశకంలో
మైసూర్ మహారాజు హైదరాబాదు నవాబు నిజాం గారు పెట్టిన ముహూర్తం, తుంగభద్ర నది డ్యామ్ నిర్మాణ ముహూర్తం, ఈనాడు మిత్రులు డికే శివకుమార్ గారు ఈ 33 గేట్ల పునరుద్ధరణ ముహూర్తం చరిత్రలో ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుంది. ఈ కార్యక్రమం 33 గేట్ల పునరుద్ధరణ కాదు, బళ్ళారి, అనంతపూర్, కర్నూలు సమస్యలు నాకు తెలుసు. పాలమూరు వలసల గురించి నాకు సంపూర్ణమైన అవగాహన ఉన్నది. ఈ సమస్య ఈనాటిది కాదు, 3 తరాల సమస్యను ఈ 33 గేట్ల పునరుద్ధరణ పరిష్కరించబోతుంది. బళ్ళారి, అనంతపూర్, కర్నూలు, పాలమూరు జిల్లా లక్షలాది మంది రైతుల యొక్క సమస్యలకి ఈ గేట్ల పునరుద్ధరణ ఈరోజు పరిష్కారం చూపించబోతుంది. సిఆర్ పాటిల్ గారు అత్యంత అనుభవజ్ఞుడైన, మృదుభాషి, అతి తక్కువ మాట్లాడడం, అత్యంత వేగంగా పనిచేయడం సిఆర్ పాటిల్ గారికి ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నుంచి మొదలు పెడితే ఎవరైనా సిఆర్ పాటిల్ గారికి ఒక సమస్యను అప్పచెప్తే 100% ఆ సమస్యని పరిష్కరించి శాశ్వతంగా ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తాడని సంపూర్ణంగా విశ్వసించే సిఆర్ పాటిల్ గారు ఈనాడు కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిగా ఉండడం, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక అండ్ తెలంగాణ సాగునీరు, తాగునీరు యొక్క సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుందని ఈరోజు నేను సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నా. మిత్రులారా, తరాలుగా తాగునీటి కోసం, సాగునీటి కోసం కిలోమీటర్ల కొద్దీ వలసలు వెళ్ళే మనం జిల్లాలు దాటుకొని, రాష్ట్రాలు దాటుకొని ఇతర దేశాలకు వలసలు పోయే మనం ఈరోజు మన పొలాలలో పారాల్సిన సాగునీరు, తాగునీరు పరిష్కరించుకోకపోవడం వల్ల సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి. అందుకే ఈనాడు డికే శివకుమార్ గారు ఆహ్వానం మేరకు సిఆర్ పాటిల్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, నేను 3 రాష్ట్రాల ప్రతినిధులం ఏది ఏమైనా సరే ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలి. ఈరోజు బళ్ళారి వేదిక కావాలి. ఈ తుంగభద్ర డ్యామ్ నది ఒడ్డున శాశ్వతంగా ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించాలని ఈరోజు ఒక ఆలోచనతోని, ఒక పట్టుదలతోని మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మా చర్చలు ఒక కొలిక్కి వచ్చినాయి. ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, సిఆర్ పాటిల్ గారు ఈ సమస్యకు ఒక శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తారని మేము సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మా గద్వాల, అలంపూరు, పాలమూరు జిల్లా ప్రాంతంలో రాజోలిబండ డైవర్షన్ స్కీమ్కు కేటాయించిన 15.9 టీఎంసీల నీళ్లలో ఈనాడు కేవలం 5 నుంచి 6 టీఎంసీలే మా రైతాంగం వాడుకుంటున్నారు. దాదాపుగా 10 టీఎంసీల నీళ్లు మాకు రావడం లేదు. తుంగభద్రలో మట్టి పేరుకుపోవడం కావచ్చు, నీళ్ల తరలింపులో ఉన్న సమస్యలు కావచ్చు, ఈరోజు ఆ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలి. గద్వాల, అలంపూర్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆర్డీఎస్ లక్షలాది మంది రైతులకు మేలు జరగాలి అని ఈనాడు ఈ సమావేశంలో సిఆర్ పాటిల్ గారి దృష్టికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. పెద్దలు డికే శివకుమార్ గారి సూచన మేరకు మేమందరం ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి కలిసికట్టుగా పని చెయ్యాలి అని ఈరోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఖచ్చితంగా చరిత్రలో ఈరోజు సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించబోతున్నారు. నేను మొదటి నుంచి నీకు పంచాయతీ కావాలన్నా, సమస్య పరిష్కారం కావాలన్నా అంటే సమస్యలకు పరిష్కారమే కావాలి, శాశ్వతంగా రైతాంగ ఆకాంక్షలు నెరవేరాలి అని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. అందుకే ఈనాడు రాజకీయాలకు అతీతంగా, ఎన్నికలలో స్వార్థ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకోకుండా ఈనాడు ఈ ప్రాంతంలో ఈరోజు ఇక్కడ తుంగభద్ర నది ఒడ్డున జరుగుతున్న చర్చలు చరిత్రలో గొప్ప నిర్ణయంగా మారబోతుంది. ఈ నిర్ణయం తప్పకుండా కృష్ణానది జలాలు, గోదావరి జలాలు, తుంగభద్ర నది జలాలలో అంతర్రాష్ట్ర జల వివాదాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తుందని మేము సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాం. ఆనాడు రాజులు రాజ్యాల కోసం కత్తులతో కుత్తుకలు తెంపుకుంటున్న సందర్భంలో ఈ ప్రాంత రైతాంగం కోసం మైసూరు మహారాజు
హైదరాబాదు నిజాం ప్రభు కలిసి ఈ తుంగభద్ర డ్యాంను నిర్మించారు. రాజ్యాలను ఆక్రమించుకునే రాజులే రైతుల కోసం ముందుకొచ్చి తుంగభద్ర నదీ ప్రాంతంలో డ్యాంను నిర్మించిందంటే ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధులం ఈ రైతుల కోసం అడుగు ముందుకు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది బాధ్యతగా మేము భావించి ఈ బాధ్యతను నెరవేర్చాలి అని పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, డికే శివకుమార్ గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నేను సిఆర్ పాటిల్ గారికి మా సమస్యలన్నీ విన్నవించడం. తప్పకుండా తొందరలోనే వారు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపిస్తారని మా అందరికీ సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగింది. ఈరోజు ఆ సమస్యకు ఒక మొదటి అడుగు ఈ ప్రాంతంలో మనం వేస్తున్నామని తెలియజెప్పడానికి నేను సంతోషపడుతున్నాను. सीआर पाटिल जी, इस समय पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, ये आज सालों का नहीं 100 सालों का समस्या है। ये कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी के पानी के लिए हम लोग लड़ रहे थे। जिस दिन 1950 में मैसूर महाराजा निजाम सरकार ने तुंगभद्रा नदी को शुरुआत किए, आज हमारे डेमोक्रेसी में हमारे जितने भी मुख्यमंत्री लोग हैं, किसानों के लिए, किसान भला के लिए काम करने का ज़रूरत है। इसीलिए आज हम लोग तय कर लिए ये समस्या हल्का करने के लिए जो आरडीएस में तेलंगाना और पालमूर के हिस्सा जो 16 टीएमसी हमारा पानी के साथ साथ कृष्णा के समस्या भी हम दूर करने के लिए, हल्का करने के लिए हम राजी हो गए। इसीलिए आज ये तारीख, इतिहास में ये तारीख गवाह है, इतिहास में लिखने वाले हैं ये तारीख। जो बल्लारी में, विजयनगर में जो शुरुआत हुआ, मुझे पता है बल्लारी किसानों का समस्या, अनंतपुर और करनूल, महबूबनगर किसानों का समस्या मुझे पता है। 20 साल से मैं राजनीति में हूँ, ये समस्या हल्का करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मगर कोई जिम्मेदार नहीं लिए। आज आप जिम्मेदारी लेकर इतना दूर आए, आपको मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इतना हिम्मत कोई केंद्र मंत्री ने नहीं किया। आप जिम्मेदारी लिए, इसीलिए ये इतिहास में ये गवाह है आज के तारीख। इसीलिए हम लोग जो पानी के लिए, जैसा गुजरात कच्छ में लोग पानी के लिए तड़प रहे थे, मगर आज गुजरात में आप पानी का समस्या दूर कर दिए। इसीलिए मेरा गुजारिश एक ही है, आप जिम्मेदारी लेना, आप आर्बिट्रेटर बनना, आप जज बनो, हमारा समस्या सुनो। ये समस्या दूर करने के लिए जैसा आप डिसीजन लेने वाला है, सबके लिए हम लोग सब राजी है, हम लोग सब तैयार हैं। इसीलिए आज ये इतिहास में जो पहला कदम, ये दिल्ली तक आएंगे, ये पूरा देश में हर किसानों के, हर राज्य के लिए ये एक रास्ता दिखाएंगे। आगे राज्यों के आपस में जो पानी का लड़ाई हो रहा है, ये दूर करने वाला है। इसीलिए आज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हम 3 मुख्यमंत्री हो इकट्ठा होकर आपके नेतृत्व में आप जो कमेटी डालने वाला है, वो कमेटी के साथ हम लोग काम करने वाला है। इसका हल्का करने के लिए आपका मदद जरूरी है। पानी के साथ साथ पैसे भी आपके तरफ से हम लोग मदद मांग रहे हैं। आपको तो पता है हमारा राज्यों में अभी पैसा का बहुत कमी है। केंद्र सरकार ने जो पैसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ से जो भी पानी, छत्तीसगढ़ से जो पानी है, पानी वहाँ से ये पूरा समस्या दूर करने के लिए आप कदम उठाओ। हम लोग साथ, आपके साथ चलकर ये समस्या को दूर करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपके भाषण सुनने के लिए तैयार होते जा रहे हैं, क्योंकि आप जो आश्वासन दिलाने वाला है, वो आश्वासन लेके गांव-गांव जाने वाला है। ये किसान लोग कि किसानों को समझाएंगे। आने वाले दिनों में गद्वाल, आलमपुर, महबूबनगर किसानों को आश्वासन दिलाएंगे हमारे मंत्री, हमारे एमएलए लोग, कि आने वाले दिनों में हमारे पानी हमको मिलने वाला है। ये शुभ वार्ता लेकर हम खुशी से हमारा राज्य जाएंगे। आपके नाम पे सबको बोलेंगे, सीआर पाटिल ने जिम्मेदारी लिए, हमारे समस्या दूर करने वाले हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं। और तहे दिल से हमारा डीके शिवकुमार भाई को, मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने राजनीति में मेरा साथी है, मेरा भाई है। इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म
आज तक जहां तक मुझे याद है कोई केंद्र मंत्री के नेतृत्व में 3 मुख्यमंत्री एक मंच पे नहीं बैठा। पहली बार आप और डीके शिव कुमार जी ने ये काम किए। मैं तहे दिल से डीके शिव कुमार को भी अभिनंदन देना चाहता हूं। यहीं मेरा 2 शब्द खत्म करना चाहता हूं। धन्यवाद CR पाटिल जी। ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ದಿನ. 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹ ಕೆಲಸ. ಅವರಿಗೆ ಭರ್ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು ಫಾರ್ ಅ ಹೈಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Ladies and gentlemen, it's an honor to invite a visionary leader and statesman, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu Garu, to address the gathering. Please welcome with a huge round of applause, Shri Chandrababu Naidu Garu. Put your hands together. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು. అందరికీ నమస్కారాలు. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. నేను కూడా కొన్ని రోజులు బెంగళూరులో ఉంటే కన్నడ బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడగలుగుతాం. తెలుగు కన్నడ రెండు కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు CR పాటిల్ గారు, నేను చాలామంది మంత్రులు చూశాను, కానీ మొట్టమొదటిసారిగా కేంద్రంలో ప్రభుత్వాల్ని కలపడమే కాకుండా తద్వారా నదులని కలిపే ఏకైక మంత్రి CR పాటిల్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకొక పక్కన వేదిక పైన ఉన్నటువంటి గౌరవ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శివకుమార్ గారు, గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇది కొంచెం సెట్ చేసి మనం రాజమౌళి, 3 రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి గౌరవ ఇరిగేషన్ శాఖ మాత్యులు తెలంగాణ ఉత్తమ కుమార్ రెడ్డి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రామానాయుడు గారు, అదే మరిగా కర్ణాటక మంత్రి అయినటువంటి రామలింగారెడ్డి గారు, వేదిక పైన ఉన్నటువంటి కర్ణాటక లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ బసవరాజ్ ఎస్ వరెడ్డి గారు, కేంద్ర ఇరిగేషన్ శాఖ సెక్రటరీ కాంతారావు గారు, వేదిక పైన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, 3 రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అధికార యంత్రాంగం, ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన మిమ్మల్ని అందరినీ పేరు పేరున మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. మొట్టమొదటిసారిగా
తుంగభద్ర తల్లికి ముందుగా శిరస్సు వంచి నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. అదే మరి కేంద్రానికి, కర్ణాటక, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలకు ధన్యవాదాలు. తుంగా పానం గంగా స్నానం అది ఒక సామెత, చాలా ప్రసిద్ధి. అంటే తాగడానికి ఎంతో స్వచ్ఛంగా, తీయంగా, అమృతంగా తుంగా నది ఉంటే బపుణ్య స్థానానికి అంటే బహుపుణ్యాలకి గంగ గొప్పదని అర్థం. తుంగా, భద్ర విడివిడిగా జన్మించిన రెండు నదుల కలయిక తుంగభద్రగా మారి 3 రాష్ట్రాల్లో లక్షల మందికి జీవనోపాధి కల్పిస్తున్నాయంటే ఇది మన అదృష్టం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అలాంటి డ్యాముకి 19వ గేటు కొట్టుకొని పోతే ఇమ్మీడియట్గా ఆంధ్ర నుంచి మేము స్పందించడం, ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉండి చాలా చొరవ తీసుకొని ఇమ్మీడియట్గా స్పందించారు. వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇది 70 సంవత్సరాలు చరిత్ర కలిగిన ఒక ప్రాజెక్టు. ఈరోజు ఆ గేట్లు మార్చాం. ఈరోజు మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ప్రాజెక్టులంటే ఆధునిక దేవాలయాలు. వాటిని మనం పరిరక్షించుకోవాలి. అప్పుడే భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ బాగుంటేనే భవిష్యత్ తరాలకు భరోసా ఉంటుంది. నీటి విలువ తెలిసిన వ్యక్తిగా మొట్టమొదటి దీనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. కర్ణాటకతో కలిసి 50 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో పనులు ప్రారంభించాం. 42 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. ఈ ఒక్క గేటే కాదు, 33 గేట్లు బాగా రిపేర్ చేస్తే బాగుంటుంది, రీప్లేస్ చేద్దామంటే ఇమ్మీడియట్గా మంత్రి గారు శివకుమార్ గారు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఈరోజు 6 నెలల్లో 33 గేట్లే కాకుండా మళ్ళీ శోభ వచ్చే విధంగా ఈరోజు తుంగభద్ర డ్యామ్ తయారు చేశారంటే దీనికి మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ అభినందిస్తున్నా, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నాకు ఈరోజు ఒక సంఘటన జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంది. 1983లో ఆ రోజు మే నెలలో 4 ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రి కలిసి తమిళనాడుకు ఒక్కొక్క రాష్ట్రం 5 టీఎంసీ నీళ్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయం చేశాం. ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆధ్వర్యంలో చేశారు. ఈరోజు సిఆర్ పాటిల్ గారి ఆధ్వర్యంలో కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, అది మరి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, 3 ముఖ్యమంత్రులు కలవడం ఒక చరిత్ర. ఈ చరిత్ర ఈ రాష్ట్రాల భవిష్యత్తుకి నాంది అవుతుంది. ఈరోజు మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఆ రోజు ఇక్కడ ఈ డ్యామ్ ఇబ్బంది వస్తుందంటే ఇమ్మీడియట్గా ఈ గేట్లో ఎక్స్పర్ట్గా ఉన్నటువంటి కన్నయ్య నాయుడు గారిని ఇక్కడ పంపించాం. ఈ ప్రాజెక్టుకు ఒక చరిత్ర ఉంది. రాయలసీమ కరువు సీమ, ఇంకో పక్క ఎడారిగా మారిపోయే పరిస్థితి. 70 సంవత్సరాలుగా కడప, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలకి త్రాగునీరు, కొంతవరకు తాగునీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రాజెక్టు ఈ తుంగభద్ర ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇది లేకపోతే ఇంకా చాలా ప్రమాదం వచ్చేది. తుంగభద్ర తీర ప్రాంతానికి ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉంది. విజయనగర సామ్రాజ్య వైభవానికి జీవం పోసింది. హంపి సామ్రాజ్యానికి సహజ రక్షణ కవచంగా నిలిచింది తుంగభద్ర. మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి, అలంపూర్ జోగలాంబ అమ్మవారు, హంపిలో విరూపాక్ష ఆలయం, ఇలాంటి ఎన్నో పుణ్య
క్షేత్రాలకు నిలయం. నీరు ఉంటేనే చరిత్ర, నీరుంటేనే నాగరికత. అందుకే జన వనరుల సంరక్షణ, సమర్థ నీటి నిర్వహణ మనందరి బాధ్యత. ఈ సందర్భంగా I wanted to explain one thing. Under Honorable Prime Minister Narendra Modi's leadership, country is moving very fast. Every time I am saying, right man, right place, right time, that is Narendra Modi. That is where India is moving on fast track. As Prime Minister, we are able to achieve so many achievements. If we see national highways, one idea has changed the total scenario of national highways. And also if you see similar additions in some other areas also, one nation, one telecommunication. Bandwidth is one of the most efficient bandwidth. Even if you compare America, India communication sector is more vibrant compared to America. And also, one nation, one grid. America 4 or 5 grids. In India, only one grid. You can generate power any place in the country. You can utilize any place in the country. That is the strength of India. With all these things, I want to explain one thing. This is my life ambition and desire. Country has to link rivers. Ganga, Kaveri has to be linked. Then nobody can touch us. India will be unstoppable. It is going to happen. Under our Honorable Prime Minister's leadership, our Honorable Water Resource Minister so far achieved remarkable things. Ken Betwa project, UP and Madhya Pradesh, they are able to link it. Parvati Kali Sindhu Chambal project, Rajasthan and MP, they are able to link it. This is where I am requesting Government of India, Godavari, Kaveri, you link the project under national project and also protect all our rights. Karnataka right, Andhra Pradesh right, and Telangana people also. How to do it, they have to come up with an action. Even we can take water to Tamil Nadu also. It is not a new culture for us. Nearly, if you see, 1983, with the initiative of NTR, all 3 states combined, Andhra Pradesh, Karnataka, and also Maharashtra, we are able to give 15 TMs of water to Chennai for drinking water. As on today, water is going to see sometimes, some area there is a drought. This year there is a El Nino. Even Tungabhadra, water is not coming as on now. No inflows. Even Almaty also is not filling inflows now. This is the problem. If you link all rivers, surplus and deficit you can manage, then easily you can face the drought. Even sometimes there are wars among countries, conflicts among states and districts, within the district farmers also. With this situation, only solution for the country, linking of rivers. Our Honorable Prime Minister is saying always, you link rivers first, that is intra-linking within the state. If everybody will agree, go for
interlinking within 2-3 states. Then national level also will take it up. I am having total confidence on central government under the leadership of Honorable Prime Minister. If at all anybody can do, that is only Narendra Modi can do. Linking of rivers from Ganga, Kaveri, one day it is going to happen. Always we can think only one state. We are all one. Either Karnataka, Andhra, Telangana, Tamil Nadu. We are all talking different languages, different cultures, but we are all one, that is Indians. So this concept we have to keep in mind, and also under the leadership of Honorable Water Resource Minister, we had a very good discussions today how to protect the farmers of Tungabhadra Dam, and also how to protect total farming community. Farmer is very, very important. We have to give water to them, then they will do wonders. With this, it is a historic meeting in South India. It is going to create one more history. All states, all rivers will be integrated. It is not far away. I am very happy to present today. And also I have seen Shiv Kumar is very effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revant Reddy Garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. You are going to see in future very positive results. With this, I am thanking all of you. Thank you one and all. ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಫಲ ಸತ್ಫಲವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಗಾರು ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ವಂದನೆ. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल जी को कि वे हमें संबोधित करें. पुट योर हैंड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम श्री CR पाटिल जी. नमस्कार. आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री डी के शिवकुमार जी, पूरे देश में सबसे सीनियर पॉलिटिशियन आंध्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, मेरे साथ MP रहे थे ऐसे श्री A रेवंत रेड्डी जी, श्री बासवराज S होटी जी सभापति कर्नाटक, श्री TP जयचंद्र जी कर्नाटक सरकार के विशेष प्रतिनिधि, श्री मल्लू भाटी विक्रमार्का जी उप मुख्यमंत्री तेलंगाना, श्री पैया उला केशव जी वित्त योजना वाणिज्य कर और विधायी मामले मंत्री आंध्र सरकार, डॉक्टर निर्मला रामानायडू जी जल संसाधन मंत्री आंध्र प्रदेश, श्रीमती S सविता जी पिछड़ा वर्ग मंत्री आंध्र प्रदेश, श्री N उत्तम कुमार रेड्डी जी सिंचाई एवं CAD मंत्री तेलंगाना सरकार, श्री K राघवेंद्र हिटनाला जी विधायक कोप्पल विधानसभा, श्री गौरव गुप्ता जी अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एवं जल संसाधन विभाग, श्री VL कांताराव जी सचिव जल शक्ति मंत्रालय,
माननीय डायस और आज तुंगभद्रा डैम के दरवाजे जो लगाने का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आमंत्रित सभी भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम करता हूं। तुंगभद्रा डैम कई सालों पहले इस एरिया में बना, करीब 73 इयर्स पहले ये डैम बना था। इस डैम की विशेषता है कि आज हम डैम बनाते हैं तो सीमेंट, कंक्रीट, स्टील सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, मगर 73 वर्ष पहले डैम जो बना है वो मिट्टी और चूने से बना है और आज भी ये सलामत है। उसका मतलब है कि उस टाइम भी जिन्होंने भी बनाया उन्होंने उस टाइम की पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और उसके कारण कर्नाटक के इस क्षेत्र के लिए पानी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे DK शिव कुमार जी बता रहे थे कि हमें यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है इस एरिया को, क्योंकि तुंगभद्रा से आपको यहाँ पर पानी मिलता है। मगर एक दरवाज़ा टूटा, उसके कारण ये डैम के सभी दरवाजे बदलने की आवश्यकता हुई। सबको प्रॉब्लम हो रहा था, मगर तुंगभद्रा जो चेयरमैन हैं बोर्ड के, उन्होंने, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी और तीनों सरकार, कर्नाटक की सरकार, आंध्र की सरकार और तेलंगाना की सरकार, तीनों ने मिलकर पैसा लगाकर युद्ध के दौरान पे उसको तुरंत उसको काम पूरा किया और 33 दरवाजे आज बदल के ये डैम पुनः आपकी सेवा के लिए तैयार हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हर बार कहते हैं कि जल है तो कल है, मगर सिर्फ कहते नहीं है, उसके लिए काम भी करते हैं। उन्होंने नल से जल की योजना लाकर महिलाओं को जो दूर दरार तक पानी के लिए जाना पड़ता था, उनके घर में नल से जल की योजना बना दी। आज आपने देखा होगा कि स्वच्छता के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया और 12 करोड़ टॉयलेट इस देश में नए बन गए हैं। इसी तरह जल के लिए जो उन्होंने काम किया, पहला काम किया नर्मदा डैम के ऊपर। नर्मदा डैम पूर्ण करते हुए मुख्यमंत्री थे जब भी नर्मदा डैम का पानी, सरदार सरोवर का पानी, उन्होंने पहले रिवर लिंकिंग का कार्यक्रम किया। अहमदाबाद में साबरमती में पानी डाला और जब रेवंत जी कह रहे थे कि पहले कच्छ के रण में पीने के लिए पानी नहीं था, पशुधन के लिए पानी नहीं था, आज सबसे ज़्यादा पानी गुजरात में कच्छ में भी अवेलेबल है। ये सरदार सरोवर को जोड़कर जो पानी वहाँ लेके गए उसके कारण हुआ है। जो अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो रिवर लिंकिंग के कार्यक्रम शुरू किए, उनको पता है कि हमारे देश में बारिश की कमी नहीं है, मगर हमारा प्लानिंग नहीं है। इसके कारण कहीं पर पानी से नुकसान होता है, कहीं पे पानी के बिना उसके कारण भी बुना नुकसान हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, केन बेतवा का 44,000 करोड़ की योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने मंजूर कर दी। यूपी और मध्य प्रदेश में 10,12,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। जो अभी बताया गया था माननीय चंद्रबाबू नायडू जी की ओर से कि PKC की योजना बनी, पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये 3 में राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़कर ये जो तीनों नदियों को जोड़ा गया, 10 लाख हेक्टेयर और 50 लाख लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था उसमें हो रही है। करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सैंक्शन किया है। आप देखिए हर जगह पर अंदर अंदर प्रॉब्लम चल रहे थे। हिमाचल और उत्तराखंड में किसाऊ का एक प्रोजेक्ट बनाना था, पावर भी जनरेट हो जाता, पानी भी मिल जाता, मगर कई सालों से ये काम नहीं हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के निर्देश से
माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब के अध्यक्षता में मीटिंग हुई और हिमाचल के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों की सहमति बन गई। अगले वीक में उनका MOU बन जाएगा, एक किसाओं की योजना बनेगी, तो राजस्थान और दिल्ली को भी पानी मिलेगा, वो पंजाब को भी पानी मिलेगा, हरियाणा को भी पानी मिलेगा। सबके पानी की प्यास उसके अंदर बुझने वाली है। एक दूसरी योजना थी हरियाणा और राजस्थान की, जो बारिश का सरप्लस वाटर जो राजस्थान को जाना था, करीब 38 साल से ये योजना आगे नहीं बढ़ रही थी। हमने अभी 2 दिन पहले दोनों मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की। हम सोमवार को माननीय श्री अमित भाई शाह साहब की अध्यक्षता में वो MOU साइन हो जाएगा और राजस्थान को भी पानी मिलने लगेगा। इसी बात को मैं इसके लिए आपको दोहराया कि आपको भी पानी चाहिए। मगर एक समय था कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु सभी स्टेट आपस में लड़ रहे थे। जो वो पानी का शेयरिंग, उसके लिए बात हो नहीं रही थी, कोई एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं रहा था। पर मुझे आज लगता है कि आप सबके उपस्थिति में आज अच्छा दिन लग रहा है। तीनों मुख्यमंत्री आज एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और तीनों ने कमिटमेंट किया है कि हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हम जो केंद्र सरकार की ओर से जो तय होगा, जो पहले से कुछ तय हुआ है, किसी को अन्याय ना हो, जो पानी देना है वो पानी सबको मिले, इस तरह की योजना बने, इसके लिए आज तीनों मुख्यमंत्रियों ने सहमति दी है। मैं DK शिव कुमार जी को, माननीय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी को भी और श्री A रेवंत जी को भी बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने देश के अंदर जो बदलाव आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से देश में सड़क बनाकर सबको जोड़ रहे हैं, इसी तरह पानी की योजना बनाकर भी सबको जो जोड़ना चाहते हैं, इसके अंदर आपने आज कई कदम एक साथ तीनों ने मिलकर आगे बढ़ा है। इससे आप सबको भी पानी मिलेगा। पानी मिलेगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पानी ज़्यादा मिलेगा तो आमदनी एक के बजाय 2 फसल ले पाएगा। अपने आप में इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज तुंगभद्रा डैम का जो दरवाज़ा, जो गेट रखने थे, वो तो लगा दिए गए हैं, मगर वहाँ सब सिल्टिंग हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास तो रिपोर्ट है कि पूरे देश में जो 6,500 डैम हैं, वो सभी में करीब 15% सिल्ट हो गया है। यानी कि उनके करीब 15% कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। और ये तुंगभद्रा डैम में भी 15% से भी ज़्यादा वो सिल्टिंग हो गया है। हमारे मंत्रालय में इसके लिए एक योजना बनी है। हमारे सेक्रेटरी VL कांताराव जी भी आज यहाँ पर है। हमने तीनों मुख्यमंत्री को भी कहा है कि डीसिल्टिंग के लिए हम लोग योजना बनाकर आपके सामने रखेंगे। काम तो तीनों मुख्यमंत्री को करना है, मगर जो निर्णय करना है, उनको जो टेक्निकल सहयोग करना है, वो हम जल्दी से करेंगे। और तुंगभद्रा की पानी की कैपेसिटी करीब 25 से 30% और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं इसके लिए भी तीनों मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका पहला उदाहरण है, क्या 33 गेट लग गए, ये भी तीनों मुख्यमंत्रियों ने सहयोग किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आर्थिक सहयोग भी किया। इसी के कारण ये हो पाया है। तुंगभद्रा का डीसिल्टिंग भी ये तीनों मुख्यमंत्री के सहयोग के साथ बहुत जल्दी पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि नल है, नल से जल की योजना आपके गांव में अगर नहीं चल रही है तो आप आपके मुख्यमंत्री को बता दीजिए। आपको जो मोदी साहब कहते हैं कि जल है तो कल है, ये बात आप भी भली बात जानते हो। और इसीलिए जैसे नल से जल की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई, उसी तरह
माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने योजना बनाई है एम-कैट की। किसानों को अपने खेतों में उसको जितनी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का पानी चाहिए, उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है। उसके अंदर कर्नाटक में भी 2 जगह पर 5-5 हज़ार हेक्टेयर का, आंध्र प्रदेश में भी 5-5 हज़ार हेक्टेयर के 2 प्रोजेक्ट और तेलंगाना में भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पूरे देश में 22 राज्यों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि 85% पानी वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। अगर उनको एम-कैट की योजना से वो ड्रिप से, स्प्रिंकलर से पानी यूज़ करेगा, उसको पाइप से पानी देंगे, पूरी क्वांटिटी में देंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ देंगे, तो किसान 2 बार फसल ले पाएगा। इतने ही पानी में वो 2 बार किसान फसल लेगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उसके जेब में पैसा आएगा, एक गांव भी समृद्ध होंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कह के गए थे। उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो पानी के लिए होगा। मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि तीसरा विश्व हो जाए तो हो जाने दो, पानी के लिए भी हो जाए तो हो जाने दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो सोच है, जल के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं और जिस तरह से तीनों मुख्यमंत्री उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्री भी इस पानी के सभी योजनाओं में जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए भी होगा, हिंदुस्तान कहीं पर भी नहीं होगा। उसकी पानी की आवश्यकता ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल्दी से पूरी हो जाएगी। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपको आज नए 33 गेट लगने के बाद 73 ईयर ओल्ड ये जो डैम है वो आने वाले और 50-100 साल तक आपकी सेवा में कार्यरत रहेगा। और इसके लिए मैं श्री डी.के. शिव कुमार जी को, माननीय चंद्रबाबू नायडू जी को और श्री रेवंत जी को भी और सभी डायस पर बैठे हुए सभी को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइटफुल एंड इन्फॉर्मेटिव स्पीच सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ಇನ್ನು 12 ಜನ ಅವಾರ್ಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು, ಶ್ರೀ O.R.K. ರೆಡ್ಡಿ, श्री चिराग शाह, श्री नारायण नायक, श्री के ज्ञानेश्वर, श्री राघवेंद्र जी, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ್, ಶ್ರೀ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶ್ರೀ ಕಲ್ಪೇಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ, श्री किरण जी, श्री राघवेंद्र डी, श्री पंपापति डी.के. सन्मान्य मुख्यमंत्रिಗಳಾದ श्री डी.के. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಗಾರು, ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ ಶ್ರೀ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ C.R. ಪಾಟೀಲ್, ಆನರಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿ ಈ 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೊಂದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಗೇಟ್ಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಖಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು, ಶ್ರೀ O.R.K. ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಶಾ, श्री नारायण नायक, श्री के ज्ञानेश्वर, श्री राघवेंद्र जी, श्री श्रीनिवास बी मलिगवाड़, ಶ್ರೀ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶ್ರೀ ಕಲ್ಪೇಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಜಿ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಡಿ, ಶ್ರೀ ಪಂಪಾಪತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಜನಮುಖಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ S.N. Pandey, the chairman of Tungabhadra board, who oversaw the work, is also present during the felicitation. Request Shri S.N. Pandey ji to be present during the presentation. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರಿಗೇಷನ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವರಿಂದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ.
ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ಸಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರು, ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹನಿ ಹನಿ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದ ಹಾಗೆ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನದಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಐ ಕನ್ವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಹಾನರಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಸಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫಾರ್ his esteemed presence and gracing the occasion and making the event memorable. We are deeply honored by the presence of our esteemed Chief Minister from representative state, Sri N. Chandrababu Naidu, Sri Chief Minister Andhra Pradesh, and Sri Revanth Reddy, Chief Minister of Telangana. Sir, your participation in today's event shows the spirit of the interstate cooperation and shared water security for our region. Thank you, sir, for your esteemed presence for this event, sir. I also extend warm gratitude and thanks to Basaraj Horate Sahab, Honorable Speaker, Karnataka Legislative Council, for his esteemed presence and gracing the occasion. I also extend warm gratitude and thanks to Mallu Bhatti Vikramarka, Honorable Deputy Chief Minister, Government of Telangana, for his distinguished presence. I extend my warm gratitude and thanks to Sri Nimala Rama Naidu, Honorable Minister for Water Resource, Government of Andhra Pradesh, for his distinguished presence. I extend my warm gratitude and thanks to Sri Uttam Kumar Reddy, Honorable Minister for Irrigation and CARDA, Government of Telangana, for his distinguished presence. I extend my warm gratitude and thanks to Sri P. Keshava, Honorable Minister for Finance and Planning, Commercial Tax, Legislative Affairs, Government of Andhra Pradesh, for his distinguished presence. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಅವರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಆಗಮಿಸಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. I extend my warm gratitude to the Sri T. B. Jayachandra Sahab, Special Representative Government of New Delhi. ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ, ಶಾಸಕರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.